You know, if you look for Bhojpuri songs on YouTube, तुम्हें हर चीज पर गाने मिल जाएंगे, जैसे कोरोना वायरस, हमारा लहंगा में कोरोना वायरस घुसल बावे हो, रिया चक्रवर्ती, चाइना, एनआरसी, अपना लहंगा में नरसी लागू हो खेना दे। आई नो तुम क्या सोच रहे हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? And you know what? Almost all of these songs have lakhs of views. इन गानों की cheap production quality, अतरंगी dances, सर घुमा देने वाली editing, auto-tune soundtracks, ये सब तो next level cringe है ही, मगर जैसे ही lyrics पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, then it'll hit you कि भाई हो क्या रहा है? See, we all know Bhojpuri songs are known for their over-the-top vulgarity, overt sexualization, double meaning lyrics, but आजकल जो चल रहा है ना, वो कुछ और ही है. The fact that कोरोना वायरस को sexualize कर दिया है, रिया चक्रवर्ती को prostitute बना दिया है, चाइना को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, I mean कोई फिल्टर ही नहीं है. You know, behind the cringe and vulgarity of these Bhojpuri songs, there are layers of rampant abuse, sexism and misogyny, all of which are being normalized by these songs. This should worry all of us. But the more worrying part is that ये सारे artists local हैं जिनके लिए views लाना सबसे ज्यादा important है, चाहे lyrics कुछ भी हो, चलना चाहिए बस. That's why trending news topics पर गाने बनाकर YouTube की recommendation list पर ऊपर आने के और वीडियो के चलने के chances बहुत बढ़ जाते हैं. And since these songs are not produced by music labels but are produced by independent artists, the only way they can make money on YouTube is by creating titillating songs on anything which is trending. Well, this song wasn't on a trending topic. I know so many people who've danced like crazy on this song. Not just Indians, even foreigners have grooved to it as well. See, I'm not against Bhojpuri songs. They have given us artists like Sharda Sinha, Bharat Vyas, Madan Rai, and of course Shakespeare of Bhojpuri, Bhikhari Thakur. But sadly, their legacy and music seem to have faded away. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भोजपुरी गाने वल्गर है. बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स या किसी भी रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री को देख लो, वल्गैरिटी, डबल मीनिंग लिरिक्स और ओवर्ट सेक्सुअलाइजेशन भरा पड़ा है सभी गानों में. Yes, you're right. See, I'm not taking a moral high ground here. मगर अगर सेक्सी सबटेक्स्ट होगा सभी गानों में, that for me is problematic. और इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है. भोजपुरी विकिपीडिया पेज पर इस साल जनवरी से जुलाई के बीच में बुर यानी कि वजाइना के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया, अलॉन्ग विद सेक्सुअल पोजीशंस. अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर हर गाने में औरत के लहंगे के नीचे क्या है या फिर मर्द की पैंट के अंदर क्या है, यही सब चलता रहेगा, तो जो लोग ये शौक से सुनते हैं गाने, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों प्रॉब्लमैटिक हैं ये गाने. सी, भोजपुरी इज लार्जली स्पोकन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार विद ओवर 5 crore स्पीकर्स. प्रॉब्लम यह है कि इन द रीसेंट पास्ट बिहार has seen a large migration out of the state to many parts of India and the world, और इसी दौरान the underprivileged too have gotten unlimited access to any kind of content courtesy the cheap internet data. And for the youth, भोजपुरी गाने सबसे बड़ा सोर्स है एंटरटेनमेंट का. The fact that this section of society has been left out of the purview of development for so long, have been given just basic and in many cases no education, for whom employment opportunities are far and few and gender roles are God given, भोजपुरी इंडस्ट्री होप देती है लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए. It's no surprise then that it is seen as the quickest way to get money and become famous. And in this process, many young people are growing up with a screwed up idea of sex, gender and sexuality. Also, this might just contribute to further rise in crimes against women. See, if an entire generation grows up on these Bhojpuri songs जिनमें औरतें सिर्फ sex objects ही हैं, it won't be a surprise then if the entire society considers them as sex objects, including women. You know, I'm all for sexual liberation of women, but इस केस में women empowerment की तो वाट लग गई है. Women might see themselves as sex objects not because they desire it, but because this is what they've always been told. और इन सब में भोजपुरी गाने इसी वल्गराइजेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इससे पैसे कमा रहे हैं. I don't know if censorship is a solution. I don't even know if it's possible to censor a song at such a granular level. The audiences need to be informed and educated about how these Bhojpuri songs are doing a disservice to their language, people and culture. This has to be done by their respective governments. Also, this is where the role of platforms such as YouTube comes into the picture. Also, we can be the solution as well. I don't mean that report that content creator, but drop in a comment telling them constructively why you think it's problematic. Maybe that might help them understand कि problem कहाँ है. And just because the people who are largely producing and consuming these songs still see women as sex objects because of lack of awareness and education, cannot become an excuse for us to keep quiet and normalize it. क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री cheap, vulgar और cringy songs बनाती ही रहेगी. Yes, I'm thinking aloud, but what do you think? Tell me in the comments below, and for more such videos, keep watching India Times.